Hello everyone, welcome to my channel Everything with Bills and welcome to another video, and today we're going to talk about providing that on the condition that these three phrases have same meaning, and we're just going to discuss in detail that why we use it, why we use them, and where we use them. So let's get started. Okay, so providing that on the condition that only if four of these structures or four of these grammatical phrases have same meaning, and why we particularly use them. We use these phrases to emphasize on one specific condition. ये हम किसी एक स्पेसिफिक शर्त पे जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां हम ये कहना चाह रहे हो सिर्फ एक शर्त पे, मतलब मैं आपकी क्लास अटेंड करूंगा सिर्फ एक शर्त पे कि आप ये करें। सो हम किसी एक पर्टिकुलर शर्त के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो। कंडीशन का मतलब शर्त होता है, और किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जोर दे रहे हो, या भी किसी भी काम के होने मुमकिन होने को एक कंडीशन पे रख रहे हो कि ये काम हो सकता है, ये काम मुमकिन है, ये काम हो जाएगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक पर्टिकुलर शर्त है, कंडीशन है, तो हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एनी ऑफ देम व्हाटएवर वी वांट। लेट्स take the examples that will make or give you a clear picture. See, example number one says that you may go to the party provided that you are home by 12 a.m. आप पार्टी पे जा सकते हैं या जा सकती हैं, provided that बशर्ते के, या सिर्फ एक शर्त पे के, you're home by 12 a.m. तुम 12 बजे तक घर आ जाओ। यानी तुम पार्टी पे जा सकती हो सिर्फ एक शर्त पे या बशर्ते के आप 12 बजे तक घर आ जाएं, यानी सिर्फ एक वाहिद यही शर्त है तुम्हारी पार्टी पे जाने की। सो अर्लियर आई टोल्ड यू दैट it shows one or it emphasizes on one particular condition that can make another action happen। यानी एक एक्शन को होने के लिए या उसका मुमकिन होना सिर्फ एक ही शर्त पे होगा, और वो शर्त बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट। नाउ सी एग्जांपल नंबर 2 सेज यू आर वेलकम टू ज्वाइन माय एलएस, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग। You are welcome to join my live streaming provided that you try to speak English। आप मेरी लाइव स्ट्रीम के को ज्वाइन करने के लिए वेलकम है, आपका खुशामद है, आपको हम खुशामद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि आप वहां पे अंग्रेजी बोलें। Example number 3 says, I can lend you money provided that you return me next week। मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि अगले हफ्ते आप मुझे वापस कर दें। इस प्रोवाइडेड की जगह मैं प्रोवाइडिंग भी लगा सकता हूं। आई कैन लेंड यू मनी प्रोवाइडिंग दैट यू रिटर्न मी नेक्स्ट वीक। इसकी जगह मैं ओनली इफ भी लगा सकता हूं। ठीक है, आई कैन लेंड यू मनी ओनली इफ यू रिटर्न मी नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑन द कंडीशन भी लगा सकता हूं, आई कैन लेंड यू मनी ऑन द कंडीशन दैट यू रिटर्न मी नेक्स्ट वीक। चारों पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपका दिल करे आप लगाएं। सो सी एग्जांपल नंबर 4 सेज निशा could have secured 8 bands in IELTS providing that she had practiced। निशा IELTS के अंदर 8 बैंड्स हासिल कर सकती थी, प्रोवाइडिंग दैट बशर्ते के सिर्फ एक शर्त थी कि अगर वो प्रैक्टिस करती। इसका मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए उसके 8 बैंड नहीं आए, और शर्त सिर्फ एक यही थी कि वो प्रैक्टिस करती तो उसके 8 बैंड आ जाते। नाउ एग्जांपल नंबर 5 सेज you will not postpone we will not postpone the picnic provided that it rains। we will not postpone the picnic, हम पिकनिक को पोस्टपोन नहीं करेंगे provided that it rains, बशर्ते कि अगर बारिश हो जाए, यानी बशर्ते कि बारिश ना हो जाए। अगर यानी बारिश हो गई तो हम चेंज कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, अगर बारिश नहीं होती तो हम नहीं चेंज करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे उसकी डेट पिकनिक की। नंबर 6, इसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज योर टर्न टू कंप्लीट द सेंटेंस। यू कैन पास द एग्जाम्स प्रोवाइडेड दैट। अब आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू सी एवरीबॉडीज कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने क्या बनाया। सो प्लीज वीडियो जब आप देखें, आपको लर्निंग हो रही है, सीखने को मिल रहा है, तो लाजमी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें और लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने को मिले। और घर बैठे जो लोग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, और हाउस वाइफ्स स्पेशली जो कि घर बैठकर सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए आई हैव जस्ट मेड दिस वेरी इजी फॉर देम टू लर्न।
आप रोजाना का ये एक कोई ना कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड किड्स इवन कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश। जो छोटे बच्चे हैं वो घर बैठकर, जो कोचिंग नहीं जाना चाहते या किसी वजह से नहीं जा सकते, वो भी इसको सीख के, इसको देखकर बआसानी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शंस में कमेंट किया करें। जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूं उसके बाद आई डू review, I do just check that how many of the students have just dropped some comments and they made the sentences, and I do check them and make correction if necessary. तो आप लोग वहाँ पे अपने कमेंट्स जरूर ड्रॉप किया करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और करेक्शन की जरूरत हो करता हूँ। सो another example for you that you have to complete: things can be in your control, चीजें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं, on the condition that, सिर्फ एक शर्त पे के अब आपने इस सेंटेंस को भी कंप्लीट करना है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि कैसे आपने इसको कंप्लीट किया। एंड वन मोर, प्रोफेसर कुड हैव robbed the bank of Spain provided that, ये जो मूवी थी मनी हाइस्ट, उसमें जो प्रोफेसर था उसका जिक्र हुआ है। प्रोफेसर couldn't have, सॉरी, प्रोफेसर couldn't have robbed the bank, प्रोफेसर जो है बैंक नहीं लूट सकता था, स्पेन का बैंक नहीं लूट सकता था, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के क्या आप कंप्लीट करेंगे। प्रोफेसर जो है वो स्पेन के बैंक के अंदर रॉबरी नहीं कर सकता था, नहीं लूट सकता था, बशर्ते के उसके साथी उसका साथ ना देते, कुछ भी। ठीक है जी। And there is another sentence which you have to complete. Sanji is the name. Sanji will help me provided that, Sanji मेरी मदद करेगी बशर्ते के क्या। सो आपने ये 3 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और इसको कंप्लीट करके आपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। एंड आई एम गोइंग टू चेक योर sentences and I'm going to correct your sentences if they are correct, and if they are already correct then I'll definitely appreciate your sentences, your efforts that you're really learning। और जो यहाँ पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक से एडवांस तक इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी जिससे आप अपनी घर बैठे इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, मैं उसका भी जवाब दे दिया करूंगा। और उसके अलावा अगर आपको उम्रे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरी एक प्लेलिस्ट उम्रे से रिलेटेड बनी है, वहाँ पे आपको उम्रे से रिलेटेड पूरी गाइड, उम्रे का कोई पैकेज चाहिए, उम्रे पे कोई मक्के में मदीने में कोई होटल चाहिए, वो भी रिजर्वेशन हो जाएगी, उम्रे का पूरा पैकेज दे सकता हूँ और उम्रे से रिलेटेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। फिर अगर आपको एंटरटेनमेंट का बड़ा शौक है तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं, वो आप देखेंगे, आपको मुख्तलिफ जगहों के बारे में रिव्यू मिलेगा, कहाँ अच्छा खाना है, कहाँ अच्छी पिकनिक पे जाया जा सकता है, किस पिकनिक में अंदर क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। So at the end of this video, I would like to request all of you to please subscribe to my channel, those who have not subscribed yet, and those who have already subscribed, please share my video among your old friends, family, cousins, so that I can have maximum subscribers on my channel. And it would definitely appreciate me. It will encourage me to just make these kind of good videos, good content for you. पता नहीं कैसे कैसे कंटेंट को लोग लाइक कर देते हैं और उसको बड़े शौक से देख रहे होते हैं। लोग बकरियां चरा रहे हैं, घर में बकरी ले आए हैं, बकरी को कभी चारा डाल रहे हैं, कभी बकरी को वॉशरूम ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे अजीब अजीब कंटेंट को इतना सराहा जा रहा होता है, इतना देखा जा रहा होता है। और हम मेहनत करके एजुकेशन के कंटेंट को आगे ला रहे हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो और आपको हेल्प मिले स्टडीज से भी रिलेटेड, और आपको एंटरटेनमेंट भी मिले, और रिलीजियस काम भी कर रहे हैं उसके बावजूद इतना ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रहा होता। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज watch this video, like it, comment if you have any queries, and please share this video with your old friends, among your friends, family, and any of you that you know that you think that should subscribe to my this channel. Thank you very much. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. Till then, take the very best care of yourself. Bye bye.